हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए हुए हैं आपके सामने एमसीक्यूज हैं ग्लूकोमा के। पहला क्वेश्चन है, द मीडियासिस प्रोवेक्टिव टेस्ट इज ए टेस्ट ऑफ फॉर विच ग्लूकोमा? PACG। Mediatic provocative test is usually not performed nowadays because this is not physiological. In this test, either a weak mediasis or simultaneous and mediasis amniotic 10% and phenylephrine 2% and pilocarpine are used to produce the mid dilated pupil, a pressure rise of more than 8 mmHg concentrated posterior. Dark room test is provocative test for PACG. In dark test, PACG क्या है? In dark test, IOP intraocular pressure is recorded and patient is made to lie prone in a dark room for 1 hour. Patient must remain make so that pupil remain dilated. After 1 hour, the IOP is again measured. An increase in IOP of more than 8 mmHg is considered diagnostic of PACG suspect. Mediatic are contraindication if the anterior chamber is shallow because of the risk in angle closure glaucoma. Pachymetry is done in all ग्लूकोमा भी किया जा सकता है। फर्स्ट डिस्ट्रोसिन बिफोर लेसिक भी होता है। पैकीमेट्री इज द मेजर ऑफ थिकनेस ऑफ कॉर्निया। पैकीमेट्री इज द इम्पॉर्टेंट इन केराटोकोनस स्क्रीनिंग। IOP इन मेजरमेंट बिफोर सर्जिकल लाइक लेसिक, लिम्बर रिलैक्सेशन, इंसिजन, LRI एक्सेट्रा। पांचवा क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द other eye in primary narrow angle glaucoma in laser iridectomy. 100-day glaucoma is seen in central retinal vein occlusion. In 100-day glaucoma is the neovascular glaucoma occurring in CRVO, central retinal vein occlusion. It consists of occlusion of central retinal vein without significant retinal eczema. The result in the venous status, recurrent hemorrhage are frequent and neovascularization of retina and optic disc develop. Retina undergoes pigment and atrophic change, serious application and cystoid degeneration and macular optic atrophy and hemorrhagic of neovascular glaucoma. Hemorrhagic glaucoma is also known as 100-day glaucoma because it starts 3 months after the epididymis and central retina vein occlusion. सातवां क्वेश्चन क्या है, the early glaucomatous cupping disc is oval vertically. Early glaucomatous change include vertical oval disc, symmetric of less than 0.25 between the eye, large cup 0.6 is more than, polar of disc, splinter, hemorrhage, atrophy of RNFL. 8वां क्वेश्चन, द आई susceptible to angle closure glaucoma is
hypermetropic eye. Hypermetropic eye usually small axial length, laser and anterior chamber is shallow. So people with the hypermetropic tendon to more at risk for narrow angle glaucoma. Ninth, beta blocker lower IOP mainly is decrease aqueous production. बीटा ब्लॉकर हमारा क्या काम करता है, डिक्रीज एक्वा प्रोटेक्शन, जो कि बीटा सेल्स जो होता है उसको ब्लॉक करके रखता है. पिलोकार्पिन क्या करता है ग्लूकोमा में, कंस्ट्रक्शन एंड longitudinal muscles of ciliary body and open space in trabeculoma meshwork, thereby mechanical increase the aqueous outflow. Carbonic anhydrous inhibitor क्या करता है, like dorzolamide lower IOP by decrease aqueous secretion. Rapid change in the presbyopic correction is a classical feature in open angle glaucoma. There is typically no early wearing sight of painful symptom in open angle glaucoma. It develops slowly from some time without the notification side low of for many years due to contraction pressure of the ciliary muscles and its nerve supply accommodation failure happen. The frequent change of the presbyopic glasses may be noticed. Other early symptoms include the delay, dark adoption, mild headache and itching. Colored halos around light are not seen in corneal aberration. Colored halos क्या होता है? Color halos in PSCG occur due to the accumulation of fluid in the cornea epithelium and alteration in the refractive condition of the corneal lamellae. In early senile cataract due to presence of water droplet in the lens, colored halos may occur. In conjunctivitis, the halo are due to change discharge can be eliminated by the irrigation dye. In Van Herrick slit lamp grating, close angle glaucoma or close angle is graded as grade 0. ओपन एंगल में क्या करते हैं, 1:1 होता है. Increase ocular pressure in the ophthalmos cause of all of the following except ophthalmos क्या नहीं कॉज करता, कॉर्निया वेस्कुलराइजेशन नहीं कॉज करता, स्ट्रेचिंग स्क्लेरा कॉज करता है, कॉर्निया कर्वेचर एंड प्रोविजन भी का रप्चर डिस्मेंट मेम्ब्रेन भी करता है. ऑल ऑफ 14वां क्वेश्चन, ऑल ऑफ कॉस्ट सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन इज प्राइमरी एंगल ग्लूकोमा. प्राइमरी एंगल ग्लूकोमा में सडन पेनलेस नहीं होता है, इसमें पेनफुल होता है. और सेंट्रल सीरियस रेटिनोपैथी में पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है. ऑप्टिक न्यूरोटाइटिस में भी पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है. नोनिस केमिक सेंट्रल रेटिना वेन ऑक्लूजन में भी पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है. ग्लूकोमा विच इज आल्सो नोन क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा इज प्राइमरी एंगल ग्लूकोमा. क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा को प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं. टेस्ट नॉट यूज ग्लूकोमा एवोल्यूशन, कैरोमेट्री का कोई क्लूज काम नहीं होता है. पैचमेट्रिक
ग्लूकोमा में काम कर सकता है, थर्मोस्कोपी हो सकता है, पेरीमेट्री हो सकता है, लेकिन केराटोमेट्री नहीं होता। केराटोमेट्री क्या होता है? कॉर्निया का कर्वेचर की मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस में अकर ऑल एक्सेप्ट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में नाइट ब्लाइंडनेस का कोई रोल नहीं होता है। नाइट ब्लाइंडनेस में विटामिन ए डिफिशिएंसी का कारण, हाई माइपिया का कारण होता है, ऑक्यूसिस डिसीज के कारण होता है। All of the following feature of POAG: posterior oblique angle glaucoma, primary open angle glaucoma, loss of central field। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में ट्यूबुलर विजन भी होता है, लार्ज ब्लाइंड स्पॉट भी होता है, जनरल डिप्रेशन ऑफ आइसोपर होता है, लेकिन लॉस ऑफ सेंट्रल फील्ड नहीं होता है। इन एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा ओवल वर्टिकल डायलेट होता है। अर्ली फीचर ऑफ क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट एक्यूट ऑनसेट चेंजेस ऑफ PSEG, इंक्रीज ऑल एक्सेप्ट इन फ्लैट कॉर्निया, in the stage of all glaucoma, absolute glaucoma, bionating of blood vessels is sign is glaucoma. Which of these is not likely case of painful red eye in patient? Open angle glaucoma. Essential feature of glaucoma is the optic neuropathy. uvea scleral outflow of aqueous humor increased by the prostaglandin. Risk factor of glaucoma include in cardiovascular कारण भी होता है, फैमिली हिस्ट्री होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण भी होता है, विट्रस हेमरेज, floating can be seen in all of the following. Retina, optic nerve and neuropathy. Neosensory part of retina contain how many layer? 9. Including pigment epithelium 10 layer present होता है. There is space between pigment epithelium and neurosensory part of retina. Intraphotoreceptor matrix IPM is present in the potential space between pigment epithelium and neuropathic retina and constitute a strong binding mechanism between the two by binding pigment epithelium and photoreceptor. Constituent molecular IPM intraphotoreceptor matrix is retinal binding protein या IRBM इंटरफोटोरिसेप्टर रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकोजन ग्लाइकोसेमिनोग्लाइसियन, रेटिना लेयर विच इज क्लोज टू विट्रस बॉडी इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, रेटिना लेयर विच इज क्लोज टू कोरोइड पिगमेंट एपिथेलियम जिसे ब्रोंच मेम्ब्रेन भी कहते हैं, रेटिना लेयर विच एक्ट एंटी रिफ्लेक्टेड लेयर पिगमेंट एपिथेलियम, इन रेटिना डिटैचमेंट फ्लूइड accumulate between pigment epithelium and rest of retina. First order neurons of visual pathway consist binocular cells. Diameter of fovea 0.35 mm. Retina is thickest at peripapillary region.
Retina is thinnest, ora serrata. Two regarding blood supply in retina, outer fold layer in avascular, pigment epithelium, outer nuclear layer. Most common cause of CRAO, embolism. CRAO patient may be complain sudden pain, loss of vision. Cherry red spot seen in CRAO. Cattle trunk appearance is seen in CRAO. Neovascular glaucoma is complete of all diabetic retinopathy. Result disease CRO. Hard exudates are seen in outer flexiform layer. Cotton wool spot are seen in nerve fiber layer. In cystoid macular edema fluid occlusion in outer flexiform layer. Cystoid macular edema collection of fluid in the outer flexiform Henel's layer and inner nuclear layer of the retina center around the fovea. Flame shaped in hemorrhage occur in nerve fiber layer. Henel layer is outer flexible layer. Earliest and most pathogens sign appearance in diabetic retinopathy. Microneurism. Hard exudates are made up of lipoprotein. In DR screen in type 1 DM patient, first fundus examination should be done after 5 years. Type 1 diabetes, insulin dependent diabetes is the chronic condition which is the pancreas produce little no insulin. It is called juvenile onset diabetes because often this begins in children. Type 1 is less more common but risk more. Type 2 diabetes, adult onset diabetes, is not insulin dependent. It is the chronic mechanism condition in the body does not use insulin properly. Type 2 diabetes is most common type of diabetes. 24वां क्वेश्चन है इन डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग इन टाइप 2 diabetic patient first fundus examination is done at the time of diagnosis. Two regarding diabetic retinopathy, incision increase with duration of disease. FFA seen in central ferrous chorioretinopathy. AB in blood pattern, smoke sticking pattern. Average arm of retina circulation time 10 to 15 seconds. Hypofluorescence is seen in all except leakage of dye. Length of intraorbital part of optic nerve 25 to 30 millimeter. Optic nerve consists of axon that arise from ganglion cell. Fibrous origin in the nasal have health of the both either decussate at optic chiasma. Optic tract consists of fibers from the temporal half the same eye, nasal half the positive eye. Optic radiation extend from lateral geniculate body of visual cortex, condition which
produce visual loss of normal fundus, all amblyopia, retrobulbar neuritis, chiasmal tumor. Candle wax spot are seen in retina sarcoidosis. No wall is seen in periplanitis. In absence of light, pupil dilate. Will sleep pupil is constant. When parasympathetic drug applied on eye, pupil is dilate. When sympathetic drug applied on the eye, pupil is dilate. In hormone syndrome, pupil is constant. In complete third nerve paralysis, pupil is dilate. When a bright light is no to one eye only, is meiosis occur in both eye. Systemic opioid like morphine caused pupil constant. Average optic disc diameter approximately 1.5 mm. Parafoveal area 2.5 mm diameter, fovea 1.5 mm diameter, foveola 0.35. Optic nerve axon emergence from the ganglion cell. Length of optic nerve 5 cm. Optic nerve derived from optic sulc. Ptosis in mediasis is seen in oculomotor nerve pulse. Homolytic hemorrhage is result in lesion in optic tract.